Say hello, ma'am. How are you all? I hope you all are fine. So, this is the last day of your summer camp. I hope you all enjoyed it very well and you have learned so much activities related to your motor skills, painting, craft, and cooking without fire. I hope it is very helpful for all of you. Very good. So this is our last day of the summer camp. I have some interesting activity for all of you. Today I am going to teach you how to make your own DIY aquarium. Because we all love fishes, we all love animals. हमें fishes देखना पसंद है ना? Some of us have aquarium in our house. हम किसी किसी के घर में aquarium होता है घर में, but किसी किसी के घर में नहीं होता है. तो आज मैम आपको अपना DIY aquarium बनाना सिखाएंगे. It is very easy and it is very fun. So get ready. I hope you all are excited for this activity. Very good. Let's jump to the activity. Material required for this activity is some craft paper, but you have must to use blue paper. Okay, आपके पास blue paper होना ज़रूरी है because the water is of blue color. Okay, if you don't have blue color, you can use white paper and color it blue with the help of watercolor and some colorful craft papers. Next is one plate which is in circle shape. Okay, some leaves and some little flowers if you have, some sand, sketch colors, glue and scissors. So let's start our activity. First you have to take the paper, the blue paper. Now take the plate. Now put it on the paper. Now with the help of pencil draw a circle. Okay, let's draw a circle. Very good. Now you have to cut it with the help of scissor. हम circle को scissor की help से cut कर लेंगे. In a circle. Like this, a perfect circle. Now take a glue. Now with the help of glue make some waves. हम waves जैसा बनाएंगे हाफ पोर्शन में. नाउ नीचे के पोर्शन में हम क्या लगाएंगे, ग्लू लगा देंगे. Like this. Now with the help of finger हम इसको स्प्रेड कर देंगे. Very nice. Slowly with the help of finger spread it. Very. Now take your sand. जो हमने sand ली थी हम इसको अपने जहाँ पे फेविकॉल लगाया है वहाँ पे डाल देंगे. So that हमारी sand stick हो जाए. Spread it with your hands. जो एक्स्ट्रा सैंड है हम उसको अपनी प्लेट में अलग कर देंगे. Like this. Like this.
Very good. Now take the leaves. अब हम leaves को paste करेंगे. Apply Fevicol on the leaf. Easily, gently. Now paste it. हम इसको paste करेंगे थोड़ा सा sand के ऊपर and थोड़ा सा sand के नीचे. Like this. Very good. Now take some flowers. हम थोड़े से flowers लेंगे और हम other side पे हमारे जो हमने flowers बनाए थे इसको हम थोड़ा ऊपर लगाएंगे. Okay? ये हमारा water है, ये हमारा ground है जो sea level का ground होता है. Okay? Apply Fevicol. Like this. इसको It is not finished yet. हमारा sea aquarium तो पूरा हो रहा है, but इसमें तो fish ही नहीं है. Now let's draw one fish. Okay. Now take one paper, color paper. With the help of pencil, हम अपनी फिश ड्रॉ करेंगे. इतने हम अपने एक्वेरियम को ड्राई होने के लिए रख देंगे. ओके. नाउ हम पहले फिश का माउथ बनाएंगे लाइक दिस. फिश ड्रॉ करेंगे. Like this. Good. हम ये फिश को बहुत ब्यूटीफुल बनाएंगे. Like this. See, I have drawn the fish. Now with the help of sketch colors हम इसकी outlines करेंगे and then हम इसको scissor की help से cut कर देंगे. Okay everyone. Now for the outline I'm using black. ब्लैक से हम इसकी बाहर की आउटलाइन करेंगे. आउटर आउटलाइन हम कर रहे हैं ब्लैक. आईज भी हम ब्लैक से करेंगे. वेरी नाइस. हम इसके जो ये पैटर्न है इसके लिए आई एम यूजिंग रेड. ओके. आई एम यूजिंग रेड कलर फॉर दिस.
लाइक दिस। और मैम ने जो ये लाइन बनाई है इसमें हम इसको ब्लू कलर से आउटलाइन कर देंगे। ओके, हम इसको कलर नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये ऑलरेडी पिंक कलर के कलर पेपर पे ड्रॉ है। नाउ विद द हेल्प ऑफ सीजर लेट्स कट इट। हम इसको कट करेंगे जेंटली, ओके, स्लोली स्लोली। Like this, okay. Now what we have to do is we have to paste our fish here. हम अपने फिश को यहाँ पे पेस्ट करेंगे वाटर वाली साइड पे, ओके, दिस इज द वाटर साइड। हम इसको पेस्ट कर देंगे। Now apply some फेविकॉल on the back side properly, ओके। हम बहुत अच्छे से फेविकॉल लगाएंगे, बहुत सारा फेविकॉल लगाना है आपको so that ये अच्छे से स्टिक हो जाए। ओके एवरीवन, ईच एंड एवरी पार्ट पे हम फेविकॉल लगाएंगे। विद द हेल्प ऑफ फिंगर हम उसको सारे में स्प्रेड कर देंगे लाइक दिस। वेरी नाइस। नाउ हम क्या करेंगे, इसको मिडिल में पेस्ट कर देंगे लाइक दिस। नाउ आवर एक्वेरियम इज अबाउट टू रेडी बट इट इज नॉट फिनिश येट। हम इसको ऐसे भी अपने घर में रख सकते हैं बट ये इतना ज़्यादा प्रिटी नहीं लग रहा है। सो नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, हम एक पेपर लेंगे, क्राफ्ट पेपर, एंड मैम इस पेपर पे इसको पेस्ट कर देंगे एंड हम यहाँ पे अपनी हेडिंग लिखेंगे माई एक्वेरियम। ओके, लेट्स डू दिस। फर्स्ट यू हैव टू टेक स्केल, ड्रॉ करेंगे, लाइक दिस। हम इसको डबल लाइन कर देंगे। ओके, नाउ हम यहाँ पे लिखेंगे माई एक्वेरियम। U-M. Write down the spelling of aquarium. Very good. Now हम क्या करेंगे, इसको अपने पेपर पे पेस्ट कर देंगे। Okay. Now हम यहाँ पे फेविकॉल लगाएंगे। यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, हल्के हाथ से प्रेस करेंगे like this. Now your aquarium is ready. You can name your fish. I named my fish Goldie. मैम ने अपने फिश का क्या नाम रखा है, गोल्डी। नाउ मैम इसको अपने टेबल के पास प्लेस कर देंगे। Now I have my own DIY aquarium. So everyone, I hope you like the class. Take care of yourself, make your own aquarium and share a picture with me. Name your fish, write the name of your fish in the bottom and share it with me. I hope you all liked it. Take care of yourself, stay healthy and stay safe. Bye bye. Bye everyone.